डाउनलोड नहीं किया Recording क्या? in progress. वहाँ मैम डाउनलोड्स में जहाँ पर आपके पास असाइनमेंट्स होते हैं, उसी लिंक में बेसिकली आपके पास क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं। क्या ओके आपको मैम, पता है? हाँ, आप देख लें, मगर डोंट वरी, आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास। मेरी अगली क्लास 17 तारीख को है, थर्सडे को है, तब मैं क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करूंगी कुछ एक। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, मैं जरूर करूंगी, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी? आई एम सॉरी, मैम ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होंगी? अभी तक तो कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो होगी आपको बता दिया जाएगा। कोमल, आप क्या कह रही थी? मैम हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यहाँ काफी शोर है, हम क्लास सही से अटेंड नहीं कर पा रहे आज भी, और लास्ट क्लास भी हम अटेंड नहीं कर पाए थे। हाँ जी मैम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पिंकी जी, आप प्लीज मैम आप बताएंगे इनको, कोमल को। आप अपने फ्रेंड से नोट्स मांग सकते हैं, या फिर मैम जो पीपीटी शेयर करती हैं उसे उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसके लिए आपको स्टडी सेंटर पे आके बात करनी पड़ेगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस सुमित। मैम कंप्यूटर, एक मिनट मैम, कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का जो असाइनमेंट है मैम, वो कैसे मैम उसकी जो पिक्चर्स वगैरह है वो अपलोड करनी पड़ेगी क्या मैम? यस बेस मेरी पीपीटी जो है मैं शुभम के साथ शेयर करूंगी एंड ही विल शेयर अप विद यू। एंड पीपीटी इज नथिंग, ये जो पीपीटी है ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है आपको सब्जेक्ट नॉलेज और कंटेंट नॉलेज समझाने के लिए। रेस्ट इज ऑल प्रैक्टिस। राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए। राइटिंग अगर स्किल इंप्रूव करनी है तो लिखना पड़ेगा, और बोलने के लिए अगर आप चाहते हो कि स्पीकिंग स्किल अच्छी हो तो बोलना पड़ेगा। सो दीज आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय यू। सो लेट्स गो अहेड एंड रीड दिस फर्स्ट, कि आज हम लोग क्या करेंगे। सो FEG-02 में जो हम ब्लॉक नंबर 4 कर रहे हैं, उसमें अगेन 6 चैप्टर्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन के बारे में डिटेल देंगे। जैसे आप हाउ टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, या कोई कंडीशन होती है, जैसे लेट्स से वेदर कंडीशंस। जैसे अगर आप शिमला मसूरी जा रहे हैं तो वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या हैं, किस हिसाब से, या फिर आप कहीं और जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे यूरोप जा रहे हैं, तो राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, या यूक्रेन जाने का सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वापस जाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या बेसिकली कंडीशंस होंगी उस कंट्री की, या फिर जो लोग PR के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू कॉल डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन अबाउट अ प्रोसेस, अ प्लेस, ऑब्जेक्ट, अ पर्सन, इन सब चीजों के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, नोट टेकिंग का एक स्टेप और फर्दर है, इसमें बुक में और एग्जांपल्स दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। देन अगेन देयर इज सम राइटिंग रिपोर्ट्स, जैसे एक्सपेरिमेंट राइटिंग होती है। अब एक्सपेरिमेंट राइटिंग कैसे होती है, जैसे आप ही लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपके BCA के जो होमवर्क है उसमें आप कैसे करेंगे, उसमें कॉपी पेस्ट करके चिपकाएंगे, कैसे करेंगे। सो दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली मेकिंग अ फाइल वर्क, यू आर रिपोर्टिंग एन एक्सपेरिमेंट और द वर्क दैट यू हैव डन। जैसे हम क्लास 9 10th में, या जो जिनके पास 11th 12th में साइंस थी, तो आप लोगों ने एक लैब मैनुअल बनाई होगी। उस लैब मैनुअल में क्या करते थे, आप एक्सपेरिमेंट रिपोर्टिंग करते थे, जिसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या बायोलॉजी का आप सारा का सारा जो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होता है उसके बारे में उसको डॉक्यूमेंटेशन होती है। एंड देन लास्ट इज समिंग अप। समिंग अप जो मैं पहले भी करा चुकी हूँ, समिंग अप इज नथिंग बट राइटिंग अ समरी। अब राइटिंग अ समरी कुड ऑल्सो भी, जैसे रिपोर्ट लिखने के बाद एक समरी लिखी जाती है, या फिर किसी चीज को समझाने के बाद एक समरी लिखी जाती है, या कोई टेक्स्ट पढ़ने के बाद समरी लिखी जाती है, या कोई मूवी देखने के बाद आपने उसको समराइज किया, बताया मूवी कैसी थी, या कोई स्टोरी बुक पढ़ी हो तो उसके लिए समरी है। So these are things that you need to keep in mind. So let's go ahead and see what do we have to discuss today. Okay. Now, composition writing. What exactly हम बार बार बोल रहे हैं composition writing, composition writing. ये composition writing क्या है? Composition writing is nothing but a writing procedure और a pattern जिसमें आप लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं, उसको हम लोग composition writing कहते हैं। ये basically there are 4 types of composition writing. मैं बार बार पहले भी ये 3 क्लासेस में समझा चुकी हूँ। इसमें 4 किस्म के बेसिकली राइटिंग्स होते हैं: डिस्क्रिप्शन, narration, exposition, or argumentation. So description writing is basically when we write or we describe
right? To depict an event, a place, a person, or something which creates a visual picture in the mind of reader. मतलब कि जिसको आप पढ़ते ही वर्ड बाय वर्ड जब आप पढ़े तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए. That is what you call as a descriptive writing. Now, what you can do is you can describe and list as many details as you want, depicting the look. Description writing में आपकी 5 senses का use होता है, right? So 5 senses are basically smell, touch, hear, see and feel, right? ये सब की सब ये जो 5 जो आपकी जो senses हैं उनको basically keeping in mind that with eyes you look, with nose you smell, with the skin you feel touch, with your tongue you can taste basically, right? And then with your ears you can hear. So जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखी जाती है तो इनमें ये सब चीजें लिखी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिक्चर दी जाए, कोई सीनरी दी जाए तो आपको डिस्क्राइब करना है. अगर उसमें जैसे देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, सो you can look in a picture, you can't hear sounds, but the way you write you can always say this picture is of a children's park. We can hear children running around, having fun. The giggling sound of children make the environment looks very happy. So nobody can hear a picture, but how you describe it can create an image in your mind. That is what it makes a difference. Now, another style of writing, as I said, is a narration. Narratable genre to describe what you have experienced in a day. So what do you do? For example, you went out to a party, and when you go back home, your parents ask you, so how was your party? Did you enjoy? Who all you met? What all you did? So when you tell the details, what they ask you about, is called narration. जो चीज हो चुकी है, and then you narrate the story that this is what I did. Then now third kind of writing is exposition kind of writing. And exposition is nothing but an explanatory or exposing kind of writing. In this kind of writing, you always have to mention facts, right? You always have to mention facts. इसमें फैक्ट्स डालेंगे. जैसे आजकल अगर आप सोशल मीडिया में जाती हैं तो सोशल मीडिया में अक्सर एक स्पेशल एक सेक्शन भी आता है जो फैक्ट चेक का भी होता है, right? You check the facts, whether the facts are real or not. So whatever things are being explained or being shared, are they real or not? That is very, very important. So this is very important. In exposition, we tell and explain, tell about a place, facts which are given, if there is an accident, or if there is a robbery, or if there is a new development or a building up of some structure. What are the facts involved? So that is when you do exposition. Now next is argumentation. This is used to describe the compare and in argumentation. What we do is we compare and contrast between two situations, people, or materialistic things, anything. Like for example, if you are going to buy a cell phone for yourself, then you compare and contrast, compare between two different brands, and contrast is basically उसी एक ही brand के अंदर कौन सा model आ रहा है, right? That is called the contrast. If you're writing in this genre, you should explain whatever you are defending, giving logical reasons, right? Whatever you write, writing in argumentative style, you have to give a very logical reason. Okay, there has to be a reason. Okay, just a moment. There are a lot of chats. Yes, ma'am, please could you disable the chat? Okay, ma'am. Thank you so much. Okay, now actually, it's very sad that all of you behave like a kindergarten. आप सब नर्सरी और केजी के बच्चों की तरह बिहेव करते हो. एक आपको एक फैसिलिटी दी गई है ये चैट की कि जिसमें आप अपने क्वेश्चंस थोड़ी देर रोक के रखें. आई एम शोइंग अ पीपीटी. या तो अगर आप चाहते हो मैं और लेक्चरर्स की तरह या और टीचर्स की तरह सिर्फ वर्बली बोलती रहूं और आपको कोई देखने को कुछ ना हो, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो. It's not a big deal for me. I take lot of pride in the fact that I make this PPT for you people so that आपको एक basic content knowledge हो. It's very important. तो make sure कि आप chat जब आपको ये एक facility दी जाए, आप उसका use तभी करें जब बिल्कुल last situation, right? Okay.
these are the 4 kind of description that you have to remember. Composition, descriptive, narration, exposition, argumentation. अब इसी के बेस पे आपको कोई ना कोई एक टॉपिक आएगा जिसके बारे में आपको ऐसे लिखना होगा, composition writing लिखना होगा, right? Now let's go further and let's see what is my next slide, which talks about. So descriptive writing is an important type of composition, as I said. Very often you have to describe a person, a place, or a scene, an object, working of a machine, the general conditions at a place, how common things are made or repaired, the operation of scientific instruments, and how we make use of public facilities. So descriptive writing इनमें से किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आता है कि इन अ डिजिटल एरा हाउ कैन वी नो रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट, राइट? डिजिटल एरा में आप अपने कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं, राइट? अभी तो आपको क्या होता है, टेक्नोलॉजी, एवरी 2 months देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी. For example, you're buying a mobile, there is a new technology. When you're buying a LED TV or a flat screen for yourself, there is a new technology which will come in next 2 months. If you're buying a refrigerator, there will be something new coming up in next 2 months. So how can you ensure that जो आपका जो कार्बन फुटप्रिंट इस प्लैनेट में है, व्हाट इज अ कार्बन फुटप्रिंट? मतलब कि आप कितना इस प्लैनेट में कूड़ा करके जाते हो, या कितना नुकसान या कितना कार्बन क्रिएट करते हो, राइट? एज अ ह्यूमन आप क्या करते हो? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो, और क्या ब्रीथ आउट करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो आप जो वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उस वेस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आप प्रोसीजर यूज करोगे टू लेट गो ऑफ द गार्बेज, व्हाट इज अ प्रोसीजर? ईदर यू विल बर्न इट, you will bury it, or you will submerge it in the water, which is ocean or a sea. Again, this will, what will it lead to? Rise of carbon gases in the atmosphere. Okay, so this is a very important thing. For example, thing is, do not change, do not replace your phones very fast, right? Mobile phones, not in every 6 months or a year. Try to hold them for at least 3 to 4 years. उससे भी आपका जो कार्बन इम्प्रिंट है इस प्लैनेट में वो कम हो सकता है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड एंड देन राइट एन essay based on that. Write an essay based on that, right? Or maybe how you can use old products and refurbish. You know कि एक एक इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए उसमें कितने कितने प्रेशियस मेटल्स लगते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं? They have a life. Metals have a life. After some time there will be no metals. आप कितनी माइनिंग करेंगे, right? Do we understand that? Now next, now what is a descriptive essay? Descriptive essay is an essay whose purpose is to describe or portray something, someone, or some place with enough details to help the reader create a mental picture of what is being written about. Very simple, right? आप क्या करना है, आपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनानी है. अगर अभी आपको बोलती हूँ हॉर्स, तो आपके माइंड में एक इमेज अपने आप हॉर्स की आ जाएगी. Do we understand? Just a moment, please. Okay, sorry, please. Okay, when you write a descriptive essay, your job is to paint a mental picture of a person, place, thing, or your reader, for your reader. Now, there are 2 kinds of descriptive essays. The first kind is an objective essay. In an objective descriptive essay, the writer describes objects as a person would see them, like color, shape, length, height, width, weight. An objective essay do not contain any of the writer's likes or dislikes or feeling about the object being described. A good example of an objective essay is a police report of an accident, right? Very simple. Very simple. The policeman does not say whether or not the car is his or her favorite color, or whether or not the accident happened in front of the best skateboard store in town. These are personal likes and dislikes, right?
when you do a reporting, when you write describe something, what do? You just write a report. Like आप जब FIR दर्ज कराने जाते हैं, उसमें पुलिस में ये थोड़ी बोलता है अरे अरे अच्छा वो तो मेरी फेवरेट कार थी, अच्छा जो आपकी बाइक चोरी है वो तो बड़ी फेवरेट थी। तो उसमें उसमें पर्सनल टिप्पणी नहीं होती, राइट? या the writer does not put what they feel like. But a second kind of a descriptive essay is an impressionist or a subjective essay. These kind of essays describe objects and people as the writer sees them. They rely on the writer's 5 senses to paint a picture in the reader's mind. The first step in pre-writing for a good descriptive essay is planning. Your planning should include number 1, choosing a topic. If you are given a choice, अगर आपको choice दिया, अगर choice नहीं दी गई है तो उनमें 4-5 टॉपिक में से कोई एक अपने आप चूज करो. Number 2, gathering information about the topic and using a graphic organizer to map out the structure of a descriptive essay. So map out क्या होता है? Basically जैसे आप अपना जब ऐप क्रिएट करते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वैसे ही क्या करते हैं जब राइटिंग प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं उसमें एक मैपिंग होती है कि उसमें हम पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे करेंगे. So basically if you see anywhere in any part of the world, this is very important for writing. Now, it is very important to remember that descriptive essays should contain a colorful language. Try to use as many adjectives. मैंने आपको पहले भी बोला है, as many adjectives. Adjectives are words which are used to describe nouns and pronouns. Beautiful, long, tall, short, fat, slim, blue eyes, 4, 5 kgs, 7 kgs, or something, anything which describes. Okay, descriptive essays do not tell a story, convince someone to think a certain way, or present a report about something. Okay, in a descriptive essay, your purpose is to describe as many characteristics of a person, place, thing, or a feeling as you can. जितना ज्यादा आप डिस्क्राइब करेंगे उतनी मेंटल इमेज जो है उतनी क्लियर होती जाएगी, right? That is very, very important. Okay, now, sorry. The descriptive essays for number 1, present 1 clear picture in the reader's mind. Number 2, can be objective or subjective. Number 3, have one purpose, which is to help the reader visualize the things that are being described. Therefore, it is necessary for all descriptive essays to contain a number of descriptive words and phrases. Okay. ये पिक्चर है एक डॉग की. इफ यू सी ऑन द स्क्रीन हेयर, द राइटिंग वॉचडॉग सेज ग्रेट डिस्क्रिप्टिव ऐसे यूज डिटेल ऑब्जर्वेशन. सो व्हेन यू डिस्क्राइबिंग अ डॉग, फॉर एग्जांपल जब आपका जैसे कुत्ता खो गया तो आपने कुत्ते के बारे में उसकी पिक्चर लगाई. पिक्चर तो उसकी डिस्क्रिप्शन दिखा रही है, मगर आप उसके कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं कि उसके फर्क, क्योंकि कभी कभार पिक्चर में जो कलर दिखता है इट इज नॉट द रियल थिंग. लेट्स से हम सबके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट है, राइट? जैसे आपके पास व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, स्नैपचैट का है, किसी का भी अकाउंट है, उन सब में आपने अपनी बेस्ट पिक्चर लगाई है और उस पिक्चर को भी आपने खूब एडिट करा हुआ होगा, राइट? उस एडिट का, बिकॉज यू वांट टू लुक बेस्ट, मे बी आपका वो एंगल इतना ज्यादा अच्छा आता है, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, और पिक्चर्स में जो आप दिखते हो और जो रियल लाइफ में दिखते हो सकता है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो. आपका जो कलर होगा, स्किन का कलर, पिक्चर्स में हमेशा लाइट हो जाता है, वेयर एज आप जब रियल लाइफ में हो थोड़े शायद ज्यादा सांवले हो, राइट? बट व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग इट विद वर्ड्स, यू कैन यूज एग्जैक्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग हैज व्हीटिश ब्राउन फर, राइट? तो मैंने बता दिया कि उसका जो फर है व्हीटिश है या गोल्डन कलर है या कैसे कलर का है, तो उससे उसकी डिस्क्रिप्शन बेटर हो जाती है फोटो के अलावा. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिस्क्राइबिंग समवन. Why do we describe? हमें क्या जरूरत है किसी को डिस्क्राइब करने की? कोई जरूरत नहीं है, मगर we need to describe. फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, आप किसी शादी में जाते हो तो वापस आते हो, पेरेंट्स आस्क कि भी वो आए थे, ऐसा हुआ था. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मदर है आपसे पूछ रही हैं कि क्या वो शादी में बुआ जी आई थी, मौसी जी आई थी, अच्छा बताओ क्या पहन के आई थी, कैसे दिख रहे थे, उनके बच्चे कैसे हो रहे थे, आपको क्या करना पड़ता है? उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है. Whether you like it or you don't like, that becomes a part of your description. तो हो गया ना एक तरह से डिस्क्रिप्शन ऐसे verbally. Okay,
Now, we describe people all the time. For example, you might tell your friends what your boss is like. You might tell your sister what that cute guy you saw looks like. Even outside of everyday conversation, it's very useful to know how to describe. Yes, Shubham, please go ahead. Just discuss. Is this something about rapport building as we try to communicate, or something like we write something in descriptive way or narrative way? Yes, let's say that you have an composition writing in your exam. You have to write or describe somebody, a procedure or a person. अगर मैं आपको, for example, let's say I give you a composition writing on Mahatma Gandhi, right? So महात्मा गांधी को आप कैसे पहचानते हैं? उनके गोल चश्मों से, उनकी धोती से, उनकी लाठी से, और उनके मुंह से निकले शब्द हे राम. Ma'am, I'm just talking about rapport building, not report. It's like rapport building between communicating between two people, Okay, trying to that's called the understand each. rapport building. Yes, That's yes, called the rapport rapport building. building. Yes. So rapport building में description can be used, but describe can be used actually, but this will be verbal, not a written one. Okay, so rapport building is basically the communicating thing with orally. Orally, Yes. orally, not sorry. Yes, all orally and nothing in written. Nothing Alright. in written. But for example, let's say कि आपने अपना resume दिया, कहीं इंटरव्यू के लिए गए हो, right? आपसे Yes. पहले ये पूछा जाता है, प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ. Yes. पूछा जाता है कि नहीं? ये सवाल बहुत कॉमन है. Why? Because maybe they don't have time to read your entire resume, or even if they have read your resume, they want to know how well are your skills of communicating, how well you can describe yourself as a person, not just a physical description. Physical is something which they can see for themselves, right? They don't have to go beyond your physical description because they can see you in person. But for example, if you have to describe what you are in person, in your personality, your characteristics, your thoughts in life, and whether you are dependable kind of a person or not. Can the company invest in you? So that part is also describing. That is a verbal describing. So verbal describing के लिए भी आपको words के साथ fluent होना पड़ेगा. Do you understand? If I have to describe myself, जैसे let's say I have to describe myself to an interviewer. I meet you और आपने मुझसे बात करी और आपने पूछा, please Archana, describe yourself. So what will I say? Well, hi, my name is Archana. I am from so and so place. I have worked in so and so places. I have an experience of past so many years. To describe about myself or to give more information about myself, I would say I'm a very articulate person. I love to have conversation with new set of people. I like to understand. I love to travel. I love to explore new cuisines. Apart from that, I am myself into writing, or maybe I am into planning or doing something. So I will describe myself. For that also, I need to be fluent with words. Do you understand? Yes. Does it give you a fair idea? जो आपका जो question है उससे थोड़ा सा कुछ समझ में आया? Yes, I got it. Perfect. So please remember, Shubham, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए है. Prepare some lines about yourself. जैसे Instagram में bios होता है, हम सबको पता है bios होता है. Facebook में भी bios होता है. You know what is bios? BIOS. आप में से किसी ने देखा है अपने उसमें? Yes, ma'am. देखा है ना? हाँ. Yes, ma'am. अब वो bios में आपने अपनी राम कथा नहीं लिखनी. आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स में, सो दैट यू साउंड वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें तो उसका मन करे आपसे बात करने. अब यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर. If you are an influencer, then you will write, I am an influencer on fashion, I am an influencer, I'm a blogger on food, I am a technician, or I am a programmer. तो ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या आपका प्रोफेशनल हो गया. मगर उसके अलावा बायोस में आप क्या लिख सकते हो? आपने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर शो कर सकते हो. अगर आप बायोस पढ़ो, अब फॉर एग्जांपल यू शुड रीड बायोस ऑफ पीपल हु आर मेकिंग सॉफ्टवेयर्स. You should read bios of people who are in a software company.
You should read bios about people who are working in companies like Microsoft or Adobe or other companies, Apple. You will really find very interesting. अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट है LinkedIn, you've heard of LinkedIn? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, So ma'am. Yes. LinkedIn is basically a professional platform to reach out to your new or prospective job portals or people who are ready to hire. तो जब LinkedIn में भी bios होता है, लिंक्डइन में भी बायोस होता है, प्लीज अगर आप बायोस का सेक्शन है तो आप अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे डालिए जिससे कि जो कोई आपका जब आपकी प्रोफाइल को देखे तो बोले कि हाँ भाई मुझे ऐसा ही कुछ कोई कैंडिडेट चाहिए जॉब अपने कंपनी के लिए. सो इफ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट, आपको क्या करना पड़ता है, अपने बायोस को स्पेशली प्रोफेशनल वेबसाइट्स में, उसमें आपको उसको हमेशा 10-15 दिन में अपडेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया ऐड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर ली है, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपने किसी के साथ काम किया है, या फिर आपने कोई क्या कहते हैं, किसी को कोई आइडिया प्रपोज किया और वो ऐसा ऐसा बना. सो ऑल दोज थिंग्स इज ऑल नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. इट इम्प्रूव्स योर मार्केट वैल्यू, इट इम्प्रूव्स योर मार्केट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप शादी की एड्स भी पढ़ते हैं अखबार में, उसमें लिखा होता है ना भी लड़की ऐसी दिखती है, लड़का ऐसा दिखता है, ये है. आपने वो पढ़ी होंगी एड्स या स्कूल में लिखी भी होंगी, वांटेड, ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड और समथिंग लाइक दिस, राइट? सो ये सब चीजें क्या है, वी आर डिस्क्राइबिंग पीपल, वी आर डिस्क्राइबिंग इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म. ट्विटर में क्या है, आपको 120 कैरेक्टर्स में अपने आप को डिस्क्राइब करना है, अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है या अपनी चीजों को डिस्क्राइब. दिस इज ऑल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. सिर्फ फर्क इतना है वर्ड लिमिट का. डू वी अंडरस्टैंड? सो यू विल हैव टू लर्न हाउ टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या थर्ड या फोर्थ किसी भी ईयर में हो, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ मेंटली. हाउ वुड यू लाइक टू बी नोन टू द प्रोस्पेक्टिव पीपल? आई डोंट नो कि ये कौन से चैनल में आता है. देयर इज कॉल्ड हसल, MTV हसल और समथिंग. एक्चुअली एक नया प्रोग्राम व्हिच आई एम हियरिंग दैट चिल्ड्रन आर वेरी मच ट्यून्ड इनटू, है ना? हसल के बारे में सुन रहे हैं ना हम लोग. उसमें रैपिंग चलती है, रैपिंग कंपटीशन चलता है बहुत जबरदस्त, और वो ऑन द स्पॉट रहता है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है. ये नहीं है कि फॉर्मेटेड, हो सकता है थोड़ा बहुत फॉर्मेटेड हो, मगर जो आर्टिस्ट है वो अपना लेटेस्ट और वो अपने आप प्रैक्टिस करके वो इंस्टेंटली एक हासिल करते हैं, राइट? क्या करते हैं, एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी से. सो अब ये जो बेसिकली वो क्या होती है, वो भी डिस्क्रिप्शन चल रही है. रैपिंग इज नथिंग बट अ मॉडर्न डे पोएट्री, इफ यू सी इट वेरी लॉजिकली. It is nothing but poetry. Again, it describing yourself or describing others or describing your situation with words. But you need to be quick. Words, आपके अगर आपका शब्दकोश में शब्द ही नहीं है तो आप कैसे instantly आओगे वर्ड्स के साथ? इसके लिए क्विक होना पड़ता है. माइंड को बड़ा क्विक होना चाहिए. माइंड के पास इतने सारे वर्ड्स होने चाहिए जो आपको पता हो, जो इसके साथ राइम करेंगे. जैसे कैट बैट बचपन में करा था, कैट बैट मैट सैट ब्लैट, राइट? ये सब राइमिंग हो गए. वैसे ही जब आप करते हैं उसमें राइमिंग होनी चाहिए. ओके, डू वी अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Perfect. Now, what are different ways to describe people? Let's say you want to describe a friend, a family member, or a boss. We'll probably use a few kind of information. Appearance is what someone looks like on the outside. Mannerisms are the way that someone acts or behaves. ठीक है, अरे उसके मैनर्स बहुत ही अच्छे थे, बड़े ही पोलाइट थे बोलने में, बहुत ही शांत स्वभाव के, वो उसके मैनरिज्म हो गए. अपेयरेंस मतलब फिजिकली आप कैसे दिखते हो, है ना? कैरेक्टर ट्रेट्स आर द लिटिल थिंग्स दैट मेक समवन हु दे आर. इन अदर वर्ड्स, दे आर अप, दे मेक अप समवन्स पर्सनालिटी. आपके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या हैं? बड़े गुस्से वाले हो, जल्दी शांत होते हो, पीसफुल हो, कैसे? वो आपके कैरेक्टर ट्रेट्स कहलाते हैं. ठीक है. देन इमोशंस आर व्हाट समवन फील्स एट अ सर्टेन टाइम, राइट? इमोशंस, राइट? अरे भाई बिल्कुल इमोशनलेस हैं, कितना कुछ हो गया सामने मगर एक आंसू ना टपकाया. सो दिस इज अगेन टेलिंग अबाउट अ पर्सन कि भाई दिस पर्सन हैज नो इमोशन, नो हार्ट. सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब पीपल. ओके,
Now let's go. There's a एक एग्जाम्पल मैंने लिया है और उसको जो बेसिकली है मॉडिफाई करा है समझाने के लिए कि जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग माय ग्रैंडफादर, आपको अपनी पेरेंट के बारे में, ग्रैंड पेरेंट किसके बारे में लिखनी है, बहुत सिंपल। पहला जो पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, वो कुछ फैक्ट्स बताएगा एंड इट विल आल्सो टेल यू द रीजन व्हाई द राइटर चोज दिस पर्सन टू राइट अबाउट। ओके, देन फैक्ट्स जैसे बताएंगे तो आपको बताया था जब लिखते हैं तो 5W and 1H को लिखना, मतलब 5W मीन्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सारे क्वेश्चन जो है उनको आंसर करें। पहला पैराग्राफ सेज माय ग्रैंडफादर, a person who has influenced me most in my a person who has influenced me most is my grandfather. Okay, my grandfather raised me to be sensitive, cheerful, and compassionate. He's someone I love and cherish very deeply. Okay. Now, what happens here is basically, writer is telling that the grandfather is the favorite person in the entire family. Why? Because उन्होंने उसको राइटर को रेस किया। ग्रैंडफादर बड़े ही सेंसिटिव, चेयरफुल और कंपैशनेट, मतलब कि दिल में बहुत करुणा भरे वाला आदमी है। नाउ सेकंड पैराग्राफ, सेकंड इफ यू सी द सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ आर नोन एज बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं उनको 1 and 2 कहा जाता है। अब इसमें हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, उनकी अपीयरेंस को, उसकी पर्सनल क्वालिटीज को, हॉबीज, इंटरेस्ट को, या उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन अकम्पलिशमेंट्स को, उनके बारे में करें। And then the other paragraph will be somewhere unrelated. It could be about somebody else. Maybe पहला पैराग्राफ में आपने उनकी फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया और सेकंड पैराग्राफ में वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं और क्या क्या उनकी लाइफ में अकम्पलिशमेंट्स हैं। So paragraph number 2 says, my grandfather Jack is of medium height. ये फिजिकल अपीयरेंसेस है सारी। He is in his early 70s but looks extremely young for his age. He is slim and has got short gray hair. My grandfather's face is round and friendly looking. He has small blue eyes and an expression full of kindness. He tends to wear casual clothes like jeans and t-shirts, which add to his youthful appearance. Now, third paragraph, it talks about his professional and other accomplishments of life. My grandfather is an incredibly sensitive person who helps everyone in need, yet he never seeks a reward for his kindness. ये हम सबके साथ होता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं, राइट। वो अपने बारे में ना सोच के अपने आसपास के बारे में लोगों में ज्यादा सोचते हैं। अगर उनके पास कुछ होता भी है तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ या अपने प्यार, जिनके साथ उनका प्यार बना हुआ, उनके साथ शेयर करें। सो दिस इज व्हाट द राइटर आल्सो इज टॉकिंग अबाउट। Moreover, my grandfather is so generous that he wants to share what he possesses with others. For example, he donated 10,000 shekels to an organization for Holocaust survivors. So, World War II में जब हिटलर पावर में थे तो उन्होंने बेसिकली बहुत लोगों की, बहुत सारे जूइश लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, सबकी निर्मम हत्या कर दी थी गैस चेम्बर्स में छोड़ के, बिकॉज वो जूइश लोगों को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। उसको कहते हैं जेनोसाइड, उस टाइम को बोलते हैं हॉलोकास्ट। आज भी जूइश पीपल उस बात से बहुत डरते हैं और उनके मन में उसके लिए बहुत दुख है, क्योंकि उनके दादा परदादा, दादी परदादी, या जो भी फैमिली के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड टू गो थ्रू अ लॉट टू गिव देयर चिल्ड्रन अ बेटर लाइफ। लोग छुप छुप के रहा करते थे, ठीक है। तो ये बता रहा है राइटर कि हाउ हिज ग्रैंड पेरेंट, हिज ग्रैंडफादर हेल्प द पीपल इन अ हॉलोकास्ट सर्वाइवर्स, जो बचे हुए थे, जो लोग अपने घर से डिस्प्लेस हो गए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन लोगों की मदद करना। Furthermore, I can speak to him about all my problems because he is trustworthy and keeps all my secrets. You see, this is very important. Why do you love your grandparent? Because when you share some secrets with them, they will not talk to your parents about it, but they will counsel you in a very pleasant and a nice way. Maybe your parents might not take that information so nicely as your grandparent is taking. What he does not tolerate is a lie, right? झूठ बोलना। ये बता रहा है राइटर कि what my grandparent, my grandfather does not like, जब मैं झूठ बोलूं, right? He has always told me that if you don't tell the truth,
you will only hurt your self-respect, which is very simple. So it is a simple value system which the grandfather मैम has. पीछे देखो, Sorry, Akash, मैम पीछे देखो। पीछे क्या करूं, मैं समझी नहीं. Okay, so let's go ahead. What it talks about that, you see, he's telling the writer is sharing the fact that his grandfather does not like lies because he believes that झूठ बोलना जो होता है, it's not a good thing. And eventually what would happen, जो लोग झूठ बोलते हैं वो अपने आप को hurt करते हैं, वो अपने आप को hurt करते हैं, वो किसी और को hurt नहीं करते. Okay, the last or the concluding paragraph is basically it's your personal thought, right? Your personal attitude towards a person. The writer says, in short, my grandfather is one of the most important person in my life. I believe that he has contributed greatly to my ability to show compassion and sensitivity for others. That is what the writer says. And very beautifully he has ended. So this is how you use as describing a person. जब आप अपने को भी डिस्क्राइब करते हैं तो हाउ डू यू राइट. प्लीज, एज आई सेड, आई हैव रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू, अगर आप सोशल मीडिया में हैं या लिंक्डइन वेबसाइट में है तो लोगों के बायोस पढ़ना, डॉक्टर के पढ़ना, इंजीनियर के पढ़ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पढ़िए और किसी के भी पढ़िए, एक्टर एक्ट्रेसेस. जब आप उनके बायोस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भाई दिस इज हाउ वी राइट एंड बायो, दिस इज हाउ I should also describe myself. You will have a fair idea about what to write in your bios, and it is very important. You need to learn to describe. Okay. Describing place and objects, right? अब आप कैसे किसी जगह को, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. There are various situations in which you need to describe a place or an object. Some of these situations might be following. Number one, you are describing an interesting event that took place at the railway station. You have to give few details of the platform and objects found there. For example, अगर आपको composition writing आई कि भैया मैं my first flight, my first travel experience with the flight in a flight, right? तब आपको वो उस बताना पड़ेगा जब पहली बार आप हवाई जहाज में बैठे तो आपको कैसा फील हुआ, जर्नी कैसी थी, कैसे आप गए, आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, ये सब चीजें. ऐसा भी कोई राइटिंग आ सकता है. सेकंड, you're describing the beautiful scenes of a hill station to your family. You write about the location, the height, the houses, the hills, the flowers, etc. Very simple. अगर हमने याद है तो हमने often स्कूल टाइम पे हमने समर ब्रेक में हम कहाँ गए, हिल स्टेशन गए, नानी के घर गए, इधर गए उधर गए, उसके बारे में आपने कोई निबंध या अनुच्छेद हिंदी में लिखा होगा या इंग्लिश में भी लिखा होगा आपने कोई ऐसे, right? These are very, very important things. Number 3, if you want to sell your house and advertise in a local newspaper, you must give various details like location, accommodation, fittings, etc. अगर आप advertisements देखेंगे न्यूज़पेपर में कि भैया जब आपने घर बेचना हो, खरीदना हो, तो उसमें ads कैसे, जैसे घर के बारे में क्या क्या डिटेल्स दी है, वो भी एक composition writing है. You want to buy a bicycle of a particular type, you describe the special features of the bicycle to the shopkeeper. That is also a descriptive, right? Description, giving description of an object. Okay, now ये एक example है descriptive writing का about a library, जो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा आपके साथ share करूं. And this is what it says. Let's read this. The library is my haven. Haven is a place where you feel very safe. That is what the word haven means. Rows upon rows of brightly colored books are crammed onto the towering bookcases. So मतलब एक के बाद एक rows में there are so many books together that it looks like cramped. All the books are in a towering situation. Okay. Worlds of words waiting to be raided. How beautifully book को क्या बोला है? Worlds of the words waiting to be raided. Like कि हमला कीजिए उसमें. Books ही books. The musty pages waft veils of dust into the air that tickle my nose and hint at long forgotten adventures to be unearthed. So this is, the writer is describing it about, the writer is very much describing about the fact that how that these books which are lying here, it's just like these are books where they are ready to be, unearthed. मतलब इनको ढूंढ के फिर से निकालना. Right? These are something which have been forgotten.
The dead silence makes it the perfect place to immerse yourself into the world of swashbuckling pirate that can almost taste the salt in the air, drying your mouth and feel the jostling waves crashing against the hull of the ship. So this is what they're describing कि देखिए लाइब्रेरी में कितनी शांति होती है, right? It's called the dead silence and perfectly best place to immerse yourself. मतलब कि आप बैठ जाएं और बस पढ़ना शुरू कर दें. आप हर चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जो किताब उठाएंगे उसमें वही एक्सपीरियंस मिलेगा. The only thing that dares breaks the silence is the squeaky wheel of the librarian trolley. It's the only thing that doesn't wilt under her harsh glare. The only sound you can hear is when a librarian is moving their trolley with books, and that trolley makes a sound, squeaking sound. जब आप wheels move करते हैं तो एक आवाज होती है, right? That is the sound that the writer is talking about. It is a very simple descriptive writing of a library. शायद हमने जब स्कूल में थे तो इतने अच्छे ढंग से कभी डिस्क्राइब नहीं किया, but look at the words which are being used here. So beautifully chosen words. जैसे लाइब्रेरी को आप एक हेवन मानते हैं, सेफ प्लेस. फिर आप जैसे क्रैम्प, बुक्स क्रैम्प है. जैसे हम मेट्रो में चढ़ते हैं तो हम सब क्रैम्प होते हैं, क्रैम्प एक दूसरे पे चढ़े हुए ऑलमोस्ट. रेडेड मतलब प्लंज करने को, इन पे हमला करने को. Then words like waft veils of dust means मोटी मोटी लेयर डस्ट की. Okay. Then forgotten adventures to be unearthed. Very nice words. Swashbuckling pirate. Right? When you read a book, you can be a pirate, you can be anything. You're crashing against the hull of the ship. So this is what it's beautifully written paragraph, if you see, about how there is an atmosphere describing a place called library. Okay. Now let's read about another thing. Descriptive composition describing place and objects. A descriptive composition about a place or a building should consist of an introduction in which you give the name and the location of the place or a building and or the reason for choosing it. ठीक है? For a reason to choosing it. A main body in which you describe the main aspects of the place or building in detail. For example, when you describe a place, you should describe what you can see and do there. When you describe a building, you should describe it exterior and interior as well as give historical facts about it. For example, अगर आप yatra.com, goibibo.com, Trivago, जैसे ट्रैवल वेबसाइट्स में अगर आप लॉगिन करते हैं तो उन ट्रैवल वेबसाइट्स में क्या दिया होता है, आपके एक्सपीरियंसेस को. अगर आप ये होटल बुक करते हो तो उसमें ये एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्डिंग ऐसे दिखेगी, होटल ऐसा दिखेगा, रूम ऐसे होंगे, पिक्चर्स के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है और उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. Okay. Now a conclusion is also a part of a descriptive composition, which includes your comments, feelings, or a recommendation. You know, I would highly recommend this place. You should definitely go and visit. Description of places or building can be found in tourist magazines, travel brochures, stories, letters, etc. The style you use depends on the situation and the intended reader. For example, in an article for a magazine, you should use semi-formal style and a polite, respectful tone. You normally use present tense to describe a place, building. You use past tense to write about the historical facts. Okay. Now the types of places: the country, the countryside, outdoors, seaside, a beauty spot, a tourist paradise, attraction. ये words आप use करते हैं जब beach पे जाते हो, historical monument, a ruined place, a world famous site, the site of a battle, Taj Mahal, a world's famous site among the 7 wonders of the world, made out of white marble. It is such a beautiful way to express, right? आप जब ताजमहल को describe करेंगे तो आप जो words use करेंगे, those words are very important and crucial in describing the place, the building. Now my favorite place, I like this. मैंने ये choose किया है. Again, another writings that we can share with each other. My favorite place, Richmond Beach, was my spiritual home in my youth. So this is writer which is writing. Richmond Beach जो है basically USA में है और ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैं young था as a writer is writing तो मेरी spiritual place थी जहाँ पे मुझे सुकून सा मिलता था, where you're spiritually connected.
with God or with yourself. It is a rocky beach in the town of Richmond Beach, which can be reached by a long downhill drive from the town of Edmonds. Or, as I have always done, I took a 30-minute stroll from my home to the peaceful waters of a quiet walk through the woods of Woodway. It used to be a place populated by Native Americans, but now it is mainly occupied by Caucasian people. What are Caucasian people? Caucasian people, white people. गोरे लोगों को Caucasian बोला जाता है, काले लोगों को African American बोला जाता है, right? Black people, Caucasians are white. और जो लोग बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से होते हैं, चाइना से होते हैं, जापान से होते हैं, उनको बोलता है ओरिएंटल. ओके, डू वी अंडरस्टैंड? However, a totem pole stands in homage to the tribes that used to call the beach house. It has a large land with a pool, playground, 2 upper lawns for viewing and leisure, a multitude of hidden paths along the clay hillside, picnic area, and a square where people can walk around, take an outdoor shower after a swim, and benches for a spectacular view. So, for example, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई फैमिली मेंबर गांव में रहते हैं, तो आप visit to a village, how will you describe it? राइट, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं कि ये गांव इतने साल पुराना है, मेरे दादाजी ने बताया कि इस गांव में पहले ऐसा ऐसा होता था, मगर अब मौसम बदलने से या क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, देयर इज लेस वाटर इन द लेक, it's not that green, there seems to be lot of garbage around the places, but these places, some rivers are very clean, the water is so nice to drink, it's better than the water in the tap. Right? This is how you describe your favorite place. I would walk to paragraph number 2. I would walk to different location on the beach, the hidden cave in the clay hills on the left, the train tracks that led all the way from Seattle to Chicago, the mass of sagebrush where the melody of birds was making for a serene scene, and of course the beach itself, which was scattered with shells, tide pools, crabs, dolphins, driftwood, remnants of parties and more. So, आप किसी भी बीच में जाएंगे, किसी भी बीच में जाएंगे तो ये चीजें दिखेंगी दिखेंगी. क्या दिखेंगे? सी शेल्स दिखेंगे, आपको क्रैब्स भी मिल जाएंगे, आपको ड्रिफ्टवुड, छोटी छोटी लकड़ियों के पीसेस होंगे, अगर किसी ने पार्टी करी है तो उसके खाने के प्लेट वगैरह या बॉटल्स वॉटल, ये सब चीजें मिलेंगी. ये हर बीच में मिलती, ये नहीं कि सिर्फ अमेरिकन बीच में. यहाँ अगर इंडिया में गोवा जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बॉम्बे या बंगाल जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, आप किसी भी बीच एरिया में जाएंगे आपको ये सब चीजें दिखेंगी, या गुजरात के बीचेस में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको दिखेंगी. The passing trains have always fascinated me. My first word was choo-choo because the first 3 letters of my life was near the train station in Seattle's Green Lake district. So the writer is reminiscing, basically remembering all the days this child, as a child, that he spent in the Richmond Beach. जब उसको ये भी याद है कि जब वो छोटा था तो उसके पहले शब्द थे चू-चू, क्योंकि वो ट्रेन स्टेशन के पास रहते थे. Okay, so I've been calling for trains since I was born. Walking along the tracks, I would meet fascinating people, learn to know when trains are coming through the vibration and singing of the rails, and be engulfed in a world with a forest on one side and a pugget sound on the other. This mixture of forest and ocean was enchanting, and it captured my imagination. So what is this writer is telling कि ओशन के साथ बीच एरिया में उसके साथ ही थोड़ा जंगल था, तो उस एज अ चाइल्ड व्हेन द राइटर हैड स्टेड इन दैट प्लेस, the writer had very fond memories, and the way this writer describes is really very enigmatic, very enchanting, जैसे किसी ने मैजिक करा, ऐसा लगता है. आई कैन विजुअलाइज, एक्चुअली पर्सनली आई एम रीडिंग इट तो आई एम विजुअलाइजिंग कि कैसा समा रहा होगा और राइटर को कैसा फील होगा. वैसे ही अगर आप भी इतने पावरफुल वर्ड से लिखेंगे तो आई एम डेफिनेटली, जो कोई रीड करेगा उसको ऐसे ही फील करेगा जैसे मैं अभी फील कर रही हूँ. इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू फॉरगेट अबाउट रिचमंड बीच. इट इज नाउ इंटरट्वाइंड
with my poetry, adolescence, spiritual life, family life, romantic memories, and even the passing of my father, whose ashes were scattered there. So every time I visit Richmond Beach, all of these elements are in my mind and soul. There are other locations that stir my imagination and send me nostalgic rushes, but Richmond Beach is at the top of my list. Okay, this is what the writer says. How beautifully written कि उसने अपने इस 3 पैराग्राफ में अपनी लाइफ की एक जैसे पूरी हिस्ट्री खोल के रख दी, पूरी कहानी लिख दी हो. दिस इज हाउ द राइटिंग शुड बी. राइटिंग ऐसी ही होनी चाहिए. जैसे कि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो रीडर को लगे कि हाँ भाई बहुत ही जबरदस्त राइटिंग है एंड इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए. इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यूअर जो आपसे बात करे वो इस ढंग से आपने इतने अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया, या फिर अगर कोई रिटन टेस्ट भी होता है उसमें भी इतना अच्छा लिखा कि इंटरव्यू को लगेगा भैया ये कैंडिडेट तो हार्ट से जाना ही नहीं चाहिए. दैट इज हाउ इट शुड बी. ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट. एक और एग्जाम्पल है नेचर के ऊपर, और नेचर के ऊपर भी ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है. एंड आई विल शेयर दिस, यू कैन रीड इट एट योर लेजर. बट इट्स सिंपल, इट जस्ट टॉक्स अबाउट कि नेचर कितना अट्रैक्टिव है हमारे आसपास. So you will use a lot of adjectives. Now it also says nature is our mother. It nourishes and nurtures us. All basic necessities of life are provided from nature. The food we eat, the water we drink, the air we breathe, the land we live comes from nature. Nature नहीं होती तो हमें सब चीजें नहीं मिलती ना. It's very simple. Our planet Earth is rich in nature. Nature is the most precious gift of God, and all natural things make nature more attractive, like flowers, birds, plants, animals, river, lakes, valleys, seas, hills, forests, land and sky are all components of nature. The scenic beauty around us is nature, right? जो हमारी आंखों को जो एक scenic view है वो nature है. याद है आपको जब बचपन में कोई ड्राइंग कंपटीशन होता था तो आप बोलते थे अपने मन का कुछ भी बनाओ, तो आप अक्सर क्या बनाते थे? पहाड़, पहाड़ में से नदी निकलती हुई, साइड में से सूरज निकलता हुआ. Why? Because that is how you envision nature, right? That is how you envision nature. Now, role and importance of nature. The nature cycle of our ecosystem is very necessary for survival of organism. We all must take care of our components that make our nature complete. We should not pollute air, water, because they are gifts of nature. Human activities are harming and damaging the natural components which promotes life on earth. It is Mother Nature which nurtures us, never harms us. It saves us from many deadly diseases which can cause our death. Those who live close to nature enjoy a healthy and a peaceful life. And it is true. Nature presents sweet sounds of birds that touches our ears, sounds of running fresh air, and rejuvenate us. Rattling of the breeze enlivens our soul. Sounds of running water in the river makes us move within. So आप ये words अगर पढ़ो और सोचो और आंखें बंद करो तो आप अपने आप को वही महसूस करोगे, वही पाओगे जो लिखा हुआ है. Obviously जब आप सुबह उठते हो तो आप कैसे उठते हो? चिड़िया की चहचहाहट से. हाँ, हो सकता है अपने अलार्म से भी उठते हो सकता है मदर फादर की डांट से भी उठते हो, बट उठते हो ना आवाजों से. कुछ आवाजें बहुत तरकश होती हैं, बहुत कानों में तीखी लगती हैं, और कुछ आवाजें बहुत मीठी होती है, जैसे चिड़ियों का चहचहाना. ओके, दिस इज हाउ दे हैव डिस्क्राइब्ड. वर्ड्सवर्थ एज पोएट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, जिन्होंने जो नेचर के बारे में लिखते थे, he had been in close communion with the nature and wrote everything on nature. विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोएट्री है या जितना भी काम है वो सब नेचर से रिलेटेड है, क्योंकि वो नेचर के पास, रिवर के पास ही उनका घर था, तो वो अक्सर इन चीजों को देखते थे. सो नेचर इज द ग्रेटेस्ट टीचर. इट टीचेस द लेसन ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड मोर्टैलिटी, राइट? जीवन और जीवन के अंत तक, जीवन के बाद क्या है, या फिर आप फॉरएवर यंग, या फॉरएवर आप फॉरएवर दैट यू विल नेवर डाई, यू आर इमॉर्टल. Now, close contact with nature broadens our vision and make our sight penetrative through penetrate into mysteries of the world. Those are the way from nature
can't fathom the beauty that it holds. Okay, this is what the beautiful essay looks like. This is how it looks like. ऐसा ही आपको कुछ कुछ लिखना पड़ेगा. It will be good for you, whatever you write. Okay, then do write about the bad things about that conservation. आपने nature को डिटोरिएट होने से और फ्यूचर में ज्यादा डैमेज होने से भी रोकना है. डेफिनेटली यू डोंट वांट योर चिल्ड्रन टू कम ऑन अ प्लैनेट विदाउट एनी नेचर, without any plants, without anything. They will have a very tough life. Okay, so make sure, how do you do that? Don't ignore things, don't ignore nature. Make sure that we are not selfish enough to cut down all the forests, pollute water, pollute air, and pollute the land. Okay, and hunting animals, birds alike, and kill them. So we have to take care of the nature as well. So this is a simple descriptive essay on nature. Now, some of the situation in which you will need to describe the conditions. Hold on. Now, some of the situation in which you would need to describe the condition of a place are: first, you are describing to a friend the condition in the office where you work. You are not happy with the condition and you point out the broken furniture and the dusty files. You also mention the lack of cooperation among the staff. जैसे आप किसी प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस रोज जाते हैं, आपको अपना ऑफिस बिल्कुल पसंद नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पे हर जगह डस्टी डस्ट है, फर्नीचर भी सारा ब्रोकन है और स्टाफ भी बहुत अच्छा नहीं है. तब भी आप जगह को डिस्क्राइब करते हो, या बहुत ही खूबसूरत जगह हो तब डिस्क्राइब करते हो. You return to your village school after many years and notice the improved conditions. You describe it to an old classmate. You write letter to the editor of a local newspaper. You want to draw the attention of the local government to the poor condition in your area. Now you are a newspaper reporter. You are sent to report on a slum and you describe the conditions there. This is also very, very important. This is how you describe things. Okay. Now समर एस्केप, मतलब कि आप समर ब्रेक में जैसे कहीं जाते हैं तो उसके बारे में भी एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है बेसिकली, अगर आप चाहो तो ये लेफ्ट में अगर देखो तो बेसिकली बताया है कि हाउ हैव वी डिवाइडेड ऑल द पैराग्राफ्स, राइट. पहला टाइटल जो है वो पहले पैराग्राफ में आएगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो होता है, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, उसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे. दिस एसे इज रिटन इन द प्रेजेंट टेंस. मोस्ट नैरेटिव्स हाउएवर विल बी रिटन इन द पास्ट टेंस. ईदर टेंस कैन बी अफेक्टेड. ओके, या प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में लिखेंगे. ना सेकंड बॉडी पैराग्राफ, नोट यूज ऑफ डिटेल्स स्पेशली एडजेक्टिव्स. Writer makes use of figurative language, personification, flowers, and waving hello. Third body paragraph, writer continues to appeal to readers. Sense with visually descriptive words. Figurative language is again used with the simile like a carriage created by nature. What is a simile? Simile basically is nothing but basically parts of a language. Language को कैसे beautify करते हैं तब हम simile का प्रयोग करते हैं, राइट. और जब हम सिमली को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? सिमली को यूज करने से लाइक एन एज ही रोड लाइक अ लायन, मीन्स आपने इंसान को कंपैरिजन करा, उसकी रोर, उसकी आवाज को रोर, लायन की रोर के साथ कंपेयर करा. ओके, दैट इज कॉल्ड सिमिली. दैट इज कॉल्ड सिमिली. Okay, imagery means when you're writing in bold, you want there has to be a sense of appeal by the writer that needs more attention. Yes, please. मैम सिमिली में आईएनजी का भी यूज भी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिमिली में आईएनजी नहीं यूज होता है. सिमिली में सिर्फ दो वर्ड्स का यूज होता है, लाइक एंड एज. ही रोड लाइक अ लायन. She walked like an rabbit, or she hopped like a rabbit. Like and as, जब आप कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, एक इंसान या चीजों का या किसी और चीजों से, जैसे एनिमल से या किसी और चीज से, तब हम उसको सिमिली कहते हैं, राइट. कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड बेसिकली अ सिमिली. डू यू अंडरस्टैंड? ये पार्ट ऑफ स्पीच है. एक मिनट, मैं आपको कुछ और सिमिलीज बता देती हूँ जो सिंपल है. बेसिकली ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, ये एक तरीका है कंपेयर करने का दो चीजों को आपस में, ठीक है.
जैसे हम करते हैं as slow as a turtle, as proud as a peacock, as fast as a cheetah, as cold as an ice. ठीक है, ये वर्ड जो होते हैं मतलब जो एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनका कंपैरिजन के लिए यूज यस होता है। यस यस। Just a moment, I am just feeling little my throat is feeling little itchy. Let me have some water. Give me 2 minutes. I'm sorry. Have you understood, बेटा जी? आपको समझ में आ गया सिमिली क्या होता है? यस मैम। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो तो मेरी जो लास्ट क्लास है उसमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ ग्रामर, कुछ और करा दो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। प्लीज आप अपना, हाँ, बेसिक आइडिया दे दूं आपको, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन वगैरह होते हैं, उनका सिर्फ आइडिया दे दूं ताकि आपको याद हो जाए जो आपने जो स्कूल में पढ़ा था। चलेगा जी वो? मैम, हाँ जी, उनसे चीजें रिमाइंड हो जाएंगी मैम। परफेक्ट परफेक्ट। तो मैं ऐसा करूंगी, पार्ट ऑफ स्पीच और ये मैं इन चीजों को पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा पार्ट ऑफ जो बेसिकली जो ग्रामर में होता है मैं वो सब आपको करवा दूँ। नहीं मैम, ठीक वो है, तो पढ़ लिया, अब और मत कराओ, आगे कराओ जो करंट जरूरी है बाकी। आप मुझसे बोल रहे हो? यस मैम, हम जो जरूरी है बाकी वो कराओ, मैं ये तो स्कूल में पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, मैं सिर्फ ये राइटिंग मैंने आपको सारी समझा दी है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं या पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज करते हैं, बस मैं उसको सिर्फ ब्रश अप करवा दूंगी, सिर्फ बता दूंगी ताकि आप उसको रिकलेक्ट कर सकें। if you want I can do it, I can do it in 2 slides, that's not a big deal। लास्ट मेरी क्लास जो है वो सारी बेसिकली रिवीजन के लिए ही है। अगर आप नहीं करना चाहते दैट्स फाइन विद मी, आई एब्सोल्युटली फाइन विद। ओके, सो लेट्स गो अहेड फॉरवर्ड। ये बेसिकली एक समर। हाँ जी सोहित। जी मैम, उनका मतलब है जैसे कि आप अगर वो करवाना चाहते हो तो दूसरा कोई कार्टून ना मत, मतलब वो भी करवा दो ना, वो भी, ये कहने का मतलब उनका। ओके ओके, आई एम सो सॉरी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा वो नहीं करवाना चाहते। ठीक है, डोंट वरी, मैं ऐसा करूंगी, मेरी जो लास्ट जो अभी जो थर्सडे को क्लास आएगी उसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब ब्रश अप कराऊंगी ताकि आपको कुछ जो आपने स्कूल में पढ़ा है 12वीं तक वो सिर्फ रिकलेक्ट हो जाए, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता तो होता है बट उसके लिए शब्द नहीं होते कभी कभार। ओके, लेट्स गो अहेड। समर एस्केप बेसिकली जैसे आप समर ब्रेक में कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ये अगेन एक राइटिंग स्किल है, एक अगेन ऐसे है। दिस इज टॉकिंग अबाउट somebody who is living in Florida, right? My family has always looked forward to leaving Florida during the torrid summer months, and it is a tremendous relief to get out of the heated hustle and bustle of summer living in Florida. Each summer we follow the yellow brick road to our hometown in upstate New York. I have myself lived in Florida and I understand the weather over there very much. It is basically a very tropical weather and it is extremely hot because it is sultry. It is close to the ocean. The weather is extremely hot, especially the summer. Summers are very torrid and very tough, very itchy. पसीने वाली गर्मी आती है और बहुत ज्यादा, और धूप इतनी ज्यादा होती है क्योंकि अमेरिका में climate and the climatic conditions, the weather is very clear, the skies are very clear, so धूप भी ज्यादा लगती है।
सो दिस राइटर टॉक्स अबाउट कि समर उनके लिए फ्लोरिडा में बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तो वो जनरली न्यूयॉर्क में चले जाते हैं. आई हैव नॉट लिव्ड इन न्यूयॉर्क बट आई हैव लिव्ड इन वॉशिंगटन डीसी. सो वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क जो है जैसे दिल्ली जयपुर जितना दूर हुआ, तो वहां का वेदर भी बहुत अच्छा है. यस सुरुचि. सॉरी मैम, गलती से हो गया. ओके ओके बेटा जी, कोई प्रॉब्लम. No worries, my darling. Okay. Now, as we drive through the state after state, it becomes apparent that the world around us is changing. In South Carolina, we already began to notice changes. The trees appears to be touchable, offering soft plush leaves where sway in the breeze, and the grass actually invites us to share its place rather than scaring us away from the mounds of intriguing fire ants. As each state brings new surrounding, our anticipation builds and home seems closer all the time. So basically this writer talks about when they travel from Florida to New York, and in the way they see थिंग्स अराउंड. जैसे जब वो बीच में से साउथ कैरोलिना के थ्रू जब जाते हैं बाय रोड, तो वहां पर दे कैन सी कि भी वहां पर पेड़ों में नए नए लीव्स आ गए हैं, समर आने हैं, तब ऑब्वियसली देयर न्यू लीव्स ऑन द ट्रीज एंड हाउ थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड. Leaving the flatlands and entering an area where we are suddenly surrounded by hills of purple and blue are far by the most awakening moments. Virginia and Pennsylvania offer brilliant scenery and majestic hills and checkboard farmlands. I've been to Virginia and I know how Virginia looks, and it's absolutely beautiful. There are small mountains there, and definitely summer appears to be very nice during that time of the year. Everything looks beautiful. As we descend through the curves and winds of the northern region of the United States, home is now very close. We are almost there. So these are the different states which come in Florida to New York. Suddenly we have driven from wide open flatlands to a narrow winding road surrounded by hillsides of stone and trees. Around every curve, orange and black tiger lilies claim their place in the world as they push themselves out towards the car, waving hello and flashing their mysterious black spots towards us as we drive by. The journey home is almost complete as we begin our final descent through the state of Pennsylvania into upstate New York. The surroundings become comfortably familiar. Before long, we are surrounded by a sign that reads Waverly 18 miles and the familiar fields of grazing cattle. Through the last stretch of Pennsylvania, the bustling foliage seems to envelop us and carry us to the hills like a carriage created by nature. So this is how the writer is describing कि कैसे आप move करते हैं. For example, let's say कि आप दिल्ली to मुंबई जो है by road जा रहे हैं, या let's say आप हिल स्टेशन जा रहे हैं, let's say you're going to नैनीताल. आप दिल्ली टू नैनीताल जा रहे हैं, तो नैनीताल जाने के लिए बेसिकली आपको क्या पर लेना पड़ेगा? दिल्ली से यूपी वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. जो आप वो रास्ता पकड़ोगे और रास्ते में जैसे जो चीजें आएंगी, या फिर आप जैसे कि आप जैसे अगर आप हिमाचल का रास्ता पकड़ते हैं और फिर हिमाचल उस तरफ जाते हैं, वैसे तो वो रास्ता नहीं आता नैनीताल के. आई थिंक इट्स यूपी एरिया दैट विल कम. सो जिस एरिया से आप गुजरते हैं, तो what all things basically what all states which come, और हर स्टेट का एक अपना क्या है, एक अपना एक व्यू है, राइट? एक अपना एक तरीका है. सो बाय रोड अगर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कभी ट्रैफिक देखते हैं, कभी खेत देखते हैं, कभी छोटे छोटे रिवर पोखर देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं. वैसे ही बिकॉज दे आर लिविंग इन अमेरिका, सो वट एवर थिंग्स दैट दे सीइंग, द राइटर इज डिस्क्राइबिंग, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. और कैसे कैसे वो जब अपने घर के पास आ रहे हैं, उनको जो वो फीलिंग हो रही है, जो दैट फीलिंग ऑफ मीटिंग द फैमिली मेंबर्स एंड इज अनदर वर्ड. It is at this point that our family, even the youngest member, knows that our vacation in New York is about to begin. Our eldest son has joked for years that he can smell grandma's apple pie already. Approximately 15 minutes pass, and as our vehicle takes us over the final crest, we see the smokestack from the local factory as we cross the border of Pennsylvania and New York, and we are aware of our surroundings. A couple of turns later, we are there. We have reached our destination and we are home. So for example, अगर आप दिल्ली में रहते हैं मगर आपके
बहुत सारी फैमिली जो है कहीं आउट ऑफ स्टेशन, कहीं और कोई किसी छोटी जगह पे रहती है। तो आप जब ट्रैवल करते हैं जो एक फीलिंग आती है, जैसे अगर आप जयपुर भी जा रहे हैं, जयपुर में तो फैमिली रहती है, तो रास्ते में जो कुछ भी आप देखते हुए जाते हैं and the kind of feeling that you have and how you connect when going to home or meeting your family member, अरे मेरी दादी के हाथ का ये बना हुआ खाना, अरे वाह गट्टे की सब्जी बहुत ही स्वाद देगी, तो वो आप start feeling it. That is what this writer has written. And ऐसे ही आपने experiences लिखने हैं जिससे कि आप जो feeling जो है अपने हर sense से feel कर सके. You can taste, you can hear, you can see, you can smell. So ये सब चीजें सारी की सारी senses को mention किया गया है. Okay, now let's go to the next one. Describing process. The reasons behind describing process may be like the following. You describe how to prepare a particular dish. You describe how your tape recorder works to a friend who wants to borrow it. An instruction manual describes how an appliance or a machine works. You advise your friends on how to apply for a passport or for a post. जब आप प्रोसेस करते हैं, जैसे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी जो आप प्रोसीजर होता है, या लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो जो रीजन होता है वो या प्रोसेस होता है, वो अपने दोस्तों को बताते हैं यार लाइसेंस करने के लिए ये करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। या फिर जब आप लैपटॉप नया खरीदते हैं, अरे यार वो वाला लैपटॉप असूस का लैपटॉप खरीदा या एचपी का खरीदा है, अरे असूस जो है एप्पल वाले से कितना अलग है, बहुत कुछ उसके फीचर्स एक जैसे हैं मगर कुछ तो बिल्कुल ही अलग है। या फिर what do? You describe the manual, you read it. ये भी describing process कहलाता है। या जब जैसे चाय बनाते हैं या केक बेक करते हैं, that is called describing the process. Okay, ना एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। How chocolate is made, ये प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहा है। Once the pods are picked from the tree, they are opened and the beans are taken out. Pods basically चॉकलेट किससे बनती है? कोका से, कोका बीन से, ठीक है? That is what they're talking about. The beans need to go through a number of different processes before they are ready to be turned into chocolate. First, the beans and the pulp are placed in special boxes where they slowly ferment for up to 5 days. Here, the beans turn brown and start to develop their special flavor. They are then put out in the sun to dry for approximately 14 days. After this, they are roasted for about 15 minutes in preparation for the final stage. When the beans are taken out of their shells, at the end of this process, we are left with the cocoa nibs. The first step is to grind the nibs by machine or between two large stones. This produces coca liquor, a semi-solid paste, which is then cooked and mixed continuously for hours or even days until it is just right. This is also the stage at which other ingredients are added, sugar, milk, and various flavors. At this point, the cocoa nibs are ready for the last stage in the journey. For the cocoa liquor to turn into solid chocolate, it needs to be heated and cooled and heated again until it forms a solid mass, and the journey from bean to bar is complete. तो ये प्रोसीजर है। वैसे ही कोई भी प्रोसीजर का डिस्क्राइब, जैसे चाय बनाने का प्रोसीजर है, चाय पानी उबालिए, पानी उबल जाएगा तो उसमें शायद अदरक डालिए और थोड़ा सा क्या कहते हैं, साथ में आप इलायची डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। एंड देन वंस द वाटर इज बॉइलिंग, देन ऐड द टी लीव्स, व्हेन देयर इज अ कलर, देन ऐड सम शुगर, देन ऐड सम मिल्क and let it boil for some time, simmer it and then boil it for some time. So all these things is nothing but a describing a procedure. ये procedure करने का एक तरीका है, right? Now what is an experiment? अब reports के बारे में हम करेंगे। जैसे experimental report आपको बताया था, जब आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी लैब में जाके, चाहे कंप्यूटर लैब में करें, चाहे फिजिक्स लैब में, चाहे केमिस्ट्री लैब में या बायोलॉजी लैब में, जो एक्सपेरिमेंट करा है उस एक्सपेरिमेंट की डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हो, एक फाइल मेंटेन करते हो, लैब मैनुअल, राइट? उस लैब मैनुअल में, लैब मैनुअल फाइल में क्या करते हो, पूरे प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करते हो। ओके, दैट इज व्हाट यू डू, एंड देन यू शेयर दैट फाइल, that you share with the file with the teacher or your other friends and tell them कि this experiment was done by this and this. Okay, now experiment research report, कुछ experiments और research report भी हम बनाते हैं। You need to explain the method, उसमें हमें आपको explain करना है process को, investigation और describe करना है result को, evaluate हमने finding, जैसे हम करते हैं hypothesis देते हैं,
कि हम एक्सपेरिमेंट में एंड में ये कर पाएंगे, that blue litmus paper will turn into red when dipped in acid. That will show whether this is acidic in nature or not. You have to justify any conclusion you come to. ये हमने साइंस में केमिस्ट्री में वाला एग्जाम्पल बता रहे. Okay, now next we have reporting science lab experiments. उसके लिए हम क्या करते हैं? Pre experiment, title of the experiment, purpose, hypothesis, materials and procedure, and post experiment record of the result, discussion of the result, address your hypothesis and errors. इन सब चीजों को लिखते हैं, right? This is what we do generally. Okay, now डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैकेनिज्म, जैसे कैसे एक चीज आइटम और पार्ट काम करता है, वो भी एक ऐसे राइटिंग में ही आ सकता है. मैकेनिज्म इज जनरली डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम दैट हैज अ वर्किंग पार्ट और पार्ट्स. Most often the term suggests tools, instruments and machines, but other examples of mechanism could be the human body and systems like the universe or a city, which is composed of parts that work together like parts of a machine. A technical man constantly works with mechanism and always need to understand them. What they do, what they look like, what parts they have, and how these parts work together. The document describes how to write a mechanism description, also called the object description. जैसे एक मैनुअल आता है जब आप कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं उसके साथ, या जब आप फोन भी खरीदते हैं तो फोन के साथ एक मैनुअल आता है ना, हाउ टू ऑपरेट द फोन, what all things are to be required. एक पूरी किताब आती है साथ में, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ना. वो कुछ नहीं है, बट वो मैकेनिज्म को कैसे काम करना है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करती है, उसको क्लासिफाई करती है, कंपैरिजन होता है बेसिकली, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं. ओके, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. लेट्स गो लिटिल फर्दर. द प्रोसेस ऐसे एग्जाम्पल्स, हाउ टू राइट अ प्रोसेस. जैसे प्रोसेस आपने, जैसे अगर आपने कोई घड़ा बना, राइट, कुम्हार को देखा आपने, कुम्हार जब घड़े बनाता है, राइट, कैसे कैसे डिफरेंट पॉट्स बनाता है मिट्टी से, क्ले से. तो उसके लिए एक एग्जांपल है, अ पॉट इज अ कर्व्ड कंटेनर व्हिच हैज अ सिमिलर ओपनिंग ऑन टॉप एंड हैज अ बिगर सरफेस, राइट. ऊपर से मुंह पतला और नीचे से चौड़ा रहता है, which holds it when you are cooking or can support it to hold water. या तो आपको जो घड़ा या पॉट जो होता है, या तो आप कुकिंग के लिए, जैसे कुकिंग के लिए हांडी की तरह यूज करते हैं, या फिर उसको पानी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. Pots have been in use by most people in some parts of Africa and Asia like Morocco and China. And in some many parts of the world, people still use them different reason like putting flowers and so on. Pots का हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं. इन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ अफ्रीका और एशिया का दिया है, बट इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री वेयर हम बहुत सारे गमले या बहुत सारे मटके पानी मिट्टी के यूज करते हैं, राइट. My love for different cultures inspired me to think of something that could satisfy my passion and love for culture, so I settled on a project to make pots. So writer is writing कि मेरा जो passion था कि लोगों के culture के बारे में जानने के और लोगों के बारे में तौर तरीकों को जानने के लिए, तो मैंने pot making as a hobby pick up कर ली. The first step on the project was to identify the materials I would need, and so I outlined a collection of materials I would use. Clay was the main component, so I gathered and sufficient amount of clay and brought watercolors for painting. Of course, I had to get a painting brush for my artwork and a needle. After ensuring all materials are ready, I prepared some water and mix with clay and give fine dough. So उसने क्या किया, बेसिकली राइटर ने क्ले में पानी डाला और उसको थोड़ा एक फाइन आटे जैसा बना लिया, राइट. When the dough was ready, I started making the first pot in a bigger round shape, curved at the base and the smaller on the top. So उसने वो जो कुम्हार का जो व्हील होता है, राइट, पॉटरी व्हील होता है, पॉटरी व्हील में मिट्टी रखी और उसको चलाना शुरू किया और उसमें उसको शेप देते हैं. I successfully managed to make a pot that could be used for cooking. I used the needle to decorate it as applied the colors with the brush when it was still wet. After successfully making that pot, I heat it under the sun for 3 days. Right? आपको पकाना भी पड़ता है, राइट. अगर बिना पकाए वो बनाओगे तो क्या होगा, गमला मटका जल्दी फूट जाएगा, राइट, विल नॉट सस्टेन. सो 3 दिन तक उसने धूप में उसको पकाने के लिए गर्मी में रखा. My first pot was used to keep water and it could amazingly keep the water cold for long, which was such an achievement. My first experiment was
beautiful, and this has inspired me to maintain my culture. So this is what the writer feels. मेरा एक सपना था कि अपने कल्चर से जुड़ा रहूं या जुड़ी रहूं, और मैंने इसलिए पॉट मेकिंग शुरू करी, एंड दिस इंस्पायर्स मी कि मैं अपने सिस्टम के साथ वैसे ही बना रहूं. राइट, दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक, दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक, दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल राइटिंग. देखिए, आपको ऐसे ही राइटिंग प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, जो सिंपल हो मगर फिर भी बहुत इफेक्टफुल हो, पढ़ने वाले को लगे कि दे आर फीलिंग कनेक्टेड विद योर राइटिंग. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू राइट. अनदर रिपोर्टिंग का तरीका है, जैसे आप लैब की रिपोर्ट देखते हैं, जब आपका ब्लड टेस्ट होता है या कोई स्टूल टेस्ट होता है या कोई भी टेस्ट होता है, या घर वालों का किसी का टेस्ट होता है, जैसे कोविड के टेस्ट हुए, राइट, उसमें एक लैब रिपोर्ट आती है. लैब रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन होती है? प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, मटेरियल, प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट और कंक्लूजन, और एब्स्ट्रैक्ट समरी. राइट, और वो एब्स्ट्रैक्ट समरी कौन पढ़ सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मींस अ डॉक्टर, जिसको पता हो. तो लैब रिपोर्ट को लिखने का ये एक फॉर्मेट है. ओके, नाउ नोट टेकिंग, लाइक जब मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ तो आप अगर बोलती रहूंगी, तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसको नोट टेकिंग कहते हैं. द स्पीकर सेट्स द सीन फॉर हिज लेक्चर. ही मे रिवाइज व्हाट ही सेड अर्लियर. ही विल प्रोबब्ली गिव द जिस्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग, व्हाट ही और शी इज गोइंग टू से ड्यूरिंग द लेक्चर्स. लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं बोल रही हूँ आपको, अब मैम आपने क्या बोलते हैं, फिर से बोलेंगे, तो आई विल रिपीट दैट वर्ड अगेन फॉर यू, सो दैट यू कैन राइट और जॉट इट डाउन फॉर योरसेल्फ टू रिकॉल इट. Now the main part of the lecture, here you will make some points with some examples जो आपको समझ में आता है, and summing up, end में उसकी summary लिखते हैं. ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मेट भी दिखाया था और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी थे नोट मेकिंग के. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो इट एंड रेस्ट. See your book, for example. Your book has very good examples. Please follow them. That will give you a fair idea of how to do it. Now, note making के लिए आपको बहुत सारी skills की जरूरत होती है. पहली, abbreviations. जैसे आप अब्रीविएशंस बनाई, आपने डेवलपमेंट. यस, गर्व शर्मा, यस प्लीज. You've raised your hand. Okay. Now abbreviation words are like, for example, जैसे आपने डेवलपमेंट के लिए DEV and then dot लगा दिया, रिलेशनशिप के लिए reshape लगा दिया, इंफॉर्मेशन के INFOR and M उसके बाद लगा दिया, राइट. सो दैट इज अब्रीविएशन वर्ड. तो आपको अब्रीविएशंस आनी चाहिए, या अगर आपने कोई बनाई है तो उसको उसका फुल फॉर्म लिखिए. जैसे आपने वाटर के लिए H2O लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिखा, राइट. ऐसे ही ऐसे. फिर शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंस को छोटा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एग्जांपल है, जेन ऑलवेज बिहेव्स एज दो बैड थिंग्स विल बिकम वर्स. दिस कैन बी समराइज्ड एज जेन इज ऑलवेज पेसिमिस्टिक, राइट. बट यू शुड नो द वर्ड पेसिमिस्टिक. जब आपको पता ही नहीं पेसिमिस्टिक का मतलब क्या है, तो आप इस सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को इतना छोटा नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव अ वोकैबुलरी. हेलो हेलो हेलो. यस प्लीज. Yes, please. ये गाना सिर्फ आपके लिए. गाना सुना दिया आपने, कुछ और भी सुनाना है? Let's be serious with this class. We are about to end. Okay, we are about to end. मुझे पता है आपको जल्दी जाना है. Just relax. Behave like one. Okay. Really very silly and childish actually. It's okay. It's okay. Let's focus. Okay. Now, you need to learn to how to shorten these sentences. As I said, आपको अगर pessimistic word का meaning नहीं पता तो मुश्किल हो जाता है. So when you are doing a note making activity, remember आपको सुनना ज्यादा है और लिखना कम है, क्योंकि जितना ज्यादा सुनेंगे उसकी retention power रहेगी, तब उसके बाद आराम से. क्योंकि generally क्या होता है, as a human being, we can't do two things together. It becomes very very difficult for us to go ahead and do two things together. Okay. Okay. Now, Jenny. Piyush, please stop it. Piyush, stop it. Stop it, please, Piyush. I will have to make sure that you are out of this class. Ma'am, please, Piyush को निकालिए क्लास से. ये बार बार म्यूजिक चला रहे हैं. He is unable to focus and he doesn't want others to focus. Yes.
Thank you, ma'am. Sure. Okay. Thank you, ma'am. Diya. Thank you so much. Thank you. Okay. Next example is learning journal examples. अब note making और basically जो ये जो सेंस मेकिंग है इसमें एग्जैक्टली क्या होता है. सो नोट मेकिंग एक एक्सपीरियंस है, राइट? जब आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ टास्क कर रहे हैं, किसी लोकेशन में है, तो आप नोट्स ले रहे हैं, आप उस पर्पस के हिसाब से उस कर रहे हैं. वेयर सेंस मेकिंग लाइक फ्यूचर प्लानिंग होती है कि certain strategies that you will follow on in later. So this, I don't think this is basically learning journal example. जैसे for example जब journals लिखते हैं अपने, जैसे डायरी राइटिंग को हम जर्नल राइटिंग कहते हैं. तो डायरी राइटिंग जो होती है बेसिकली जो आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको बारे में डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, या फिर फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में एक प्लानिंग होती है, या फिर यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पास्ट में क्या हुआ और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है. सो दैट इज व्हाट इज आल्सो जर्नल मेकिंग का एग्जांपल वगैरह. जर्नल्स आई डोंट थिंक आपके इसमें है एज एन एक्टिविटी. ओके ओके. नाउ एग्जांपल्स ऑफ नोट टेकिंग फॉर्मेट. मैंने आपको लास्ट टाइम ये फॉर्मेट शेयर तो करा था, बट हाउएवर इट इज, आई थिंक इट इज देयर. आई हैव गिवन एन एग्जांपल आल्सो. I've already given an example. Just a moment. I think there's a background noise from my end. Let me just put it on hold. Okay, sorry. ओके. सो नोट मेकिंग का अगर आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो बेसिकली आपने डिवाइड करा है. आपको एक बड़ा सा ऐसे दिया होगा और ऐसे को जो है पैराग्राफ में डिवाइड करके, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इन पॉइंट 1, पॉइंट 2, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, टॉपिक एंड एवरीथिंग, एंड एट द एंड आपको उसका वो भी लिखना पड़ेगा, समरी और कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा. मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था. ये थोड़ा सा हेजी सा है, मैं शेयर जरूर करूंगी. ये जो आपकी मेरी पूरी पीपीटी है, तो अगर आप उसमें देख पाओगे तो देखना. ये बेसिकली ये नोट मेकिंग फॉर्मेट जो है ये एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कशन है इसमें. तो आई थिंक ये जो पैराग्राफ, ये जो ऐसे जिससे लिया था, जिस कॉम्पोजिशन से लिया गया था, उसको डिवाइड किया. जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स में जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, और अगर आपको डिप्रेशन हो जाए या बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए तो उसमें क्या क्या चीजें रेकमेंडेड होती हैं साइकोलॉजिस्ट की तरफ से. और अगर साइकोलॉजिस्ट से काम नहीं बनता तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं. साइकेट्रिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है. साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ थेरेपी देते हैं. ओके, दे ओनली गिव थेरेपीज. अगर थेरेपी से काम नहीं चलता तो हम मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को. ओके, ये उसके बारे में है. देन लास्ट टॉपिक जो है आज का वो है राइटिंग समरीज. मैंने आपको लास्ट टाइम में बनाया था. समरी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट ऑलवेज हैज टू बी इन योर वर्ड्स. इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड, और वो सारे पॉइंट्स को कवर करे. ओरिजिनल में जो पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करे. ठीक है. प्लीज रीड एंड री रीड योर समरी. अगर उसमें कोई एरर हो तो उसको हटाएं. समरी शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट ऑफ राइटर्स वर्ड्स और व्यूज, और या फिर उसके आपने उसके सिनोनिम, मतलब कि उसके सिर्फ वर्ड्स के पर्यायवाची लिख के और सब कुछ वैसा का वैसा फॉर्मेट करना. समरी इज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग. जैसे आप कोई मूवी देख के आए, और जब आप मूवी देख के आते हो तो आप अपने दोस्तों को कहानी की समरी, यार बता स्टोरी कैसी थी, कैसे मूवी में क्या क्या हुआ, एंड यू टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स. शेयर दैट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. दैट इज व्हाट यू कॉल समरी. Okay, now how to write a summary. इसमें 3 steps दिए हैं जो मैंने जो we have just talked about. If you see in this, पहला step है read and understand. Step 2, find the keywords, and then third is write the ideas in your own word. जैसे ये water pollution पे दे रखा है, ये पूरा का पूरा एक composition. इसमें लिखा है in order to have good health, people must use clean and safe water. Safe drinking water is water which is free from all impurities that cause pollution. Water pollution causes diseases such as typhoid, dysentery, cholera, diarrhea, and many others. It also kills fish and other animals. Obviously, जब water में pollution होगा तो उसमें animals भी survive नहीं कर पाएंगे. Water pollution is mainly caused by people's bad use of their water resources. In some countries, people throw human and industrial waste into rivers and lakes, right? Which is very sad, and we also do it as a country. In other
In others, they throw chemicals and pesticide into streams. Water also contains these substances and dangerous for all people, animals, plants, because these substances are not natural. जैसे अभी छठ पूजा हुई थी, तो हर साल यमुना रिवर में कितनी झाग होती दिखाया जाता है. This is all because of all the industrial waste is being dumped in Yamuna. Now, water can also get polluted from within the water supply system. For example, all over the Sudan is a place in Africa. People keep their drinking water in a water pot called zeer. It has been found that the zeer is not cleaned and covered. The water becomes polluted and cause disease. Obviously, जो चीज कवर नहीं होगी और वो उसका कंटेनर साफ नहीं करेंगे तो उसमें काई जम जाती है और काई जमने से बीमारियां, मच्छर पैदा होते हैं. Also, if people use dirty containers to remove water from the zeer, the water becomes equally polluted. अगर आप गंदा पानी निकालने के लिए कोई गंदा बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो उससे पानी फिर से गंदा होगा. Some people try to avoid this problem by fixing little taps at the bottom of the zeer. In this way, the person can get water from the zeer without putting his hands in it. So the water stays clean. जैसे इंडिया में हमारे पास मटके होते हैं, सुराहियां होती हैं, तो सुराही से तो पानी निकालने में उठाना आसान है, बट मटके में क्या होता है, आपको हाथ डुबाना पड़ता है या एक और ग्लास डुबा के उसमें से पानी निकालना पड़ता है, राइट? एंड देन व्हाट हैपेंस विद दैट, कभी अगर ग्लास गंदा हो, हाथ गंदा हो, तो उसकी वजह से पानी गंदा होता है. तो अब एक नया सिस्टम आ गया, अगर आपने देखा होगा गर्मियों में, कि मटकों के नीचे नलके लगे हुए, राइट? आप ऊपर से भरें, कवर करें और नलके से पानी पिए. क्यों? क्योंकि उससे ये होता है कंटैमिनेशन कम हो जाती है. कंटैमिनेशन कम होती है. जैसे ही कंटैमिनेशन कम होगी, वाटर बोर्न डिजीजेस नहीं होंगी ना. इसमें की स्टेप क्या है? जैसे वाटर, clean health, impurities, diseases to people and animals, pollution by substances, pollution in the zeer, cover the zeer and clean the zeer. ये important words और points है जो हमने underline करे हैं, वो हमने साथ में लिख दिए. Last step, जब आप summary लिख रहे हैं, for good health, it is good to use clean water. Water with impurities can cause a lot of disease, both to animals and to people. Water is polluted when people throw chemicals in it. Also, water from a zeer can be dangerous if the zeer is not covered and if we do not clean it well. ये इसकी summary होगी. Very simple and very easy. Okay? Now, summing up, you have to remember, आपको quoting करनी है, paraphrasing करनी है, और जो important points हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में या उन्हीं को ही mention करना है, right? उनके अलावा और किसी को नहीं करना. यूज कोटेशन मार्क्स इफ यू आर कॉपिंग वर्ड टू वर्ड. कोटेशन मार्क अगर वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं. पैराफ्रेज जब करते हैं उसको अपने वर्ड्स में लिखिए, ऑथर के वर्ड्स में नहीं. और समरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको यूज करना ना भूलें, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टेप्स इन समरी, बेसिकली आप कंप्रेस करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को, रिड्यूस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, सिंप्लीफाई डिस्क्राइब करते हैं, एलिमिनेट करते हैं चीजों को जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट? सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज टू बी मैनेज्ड एंड लुक्ड आफ्टर. एंड दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है इतना लंबा बैठना लेक्चर्स में, क्योंकि एक फिजिकल क्लासरूम इफेक्ट और एक ऑनलाइन इफेक्ट बहुत डिफरेंट होता है. घर में डिस्टर्बेंस होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी एंड आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड टीचिंग यू. इज देयर समथिंग दैट आई कैन हेल्प यू? समथिंग जो मैं आप जानना चाहें? एनी डाउट? आई विल जस्ट शेयर दिस विद शुभम. यस प्लीज. हेलो. हाँ जी मैम, लाइक एक क्वेश्चन था कि आपने बोला कि आप नोट टेकिंग फॉर्मेट को लाइक शेयर करोगे. हाँ. तो आप लाइक ये बता दो, मैं वो कहाँ पे करोगे? व्हाट्सएप? मैंने आपको पीपीटी में शेयर करा है हिमांशु. यू हैव जस्ट जॉइंड, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ओके मैम. I've already shared with the children. What I will, as I told you, you are a part of this group. Once you become a part of this group, they will share with you. आपको लिंक मिला व्हाट्सएप का? मैम अभी तक तो नहीं मिला मेरे को. मैम नहीं मिला अभी तक. अभी तो किसी बार शेयर करा? नहीं मैम, तो नहीं हुआ मेरे को ना. मेरे को ये देखो, राहुल यादव ने अभी भी करा है चैट में, व्हाट्सएप ग्रुप का. कैन यू सी इट ऑन द चैट? मैम चैट डिसेबल है.
बेटा जी लास्ट मैम उसमें था ना चैट में व्हाट्सएप का ग्रुप, अभी शीतल ने भी शेयर करा है। जी मैम, थैंक यू मैम। माय प्लेजर, माय प्लेजर, मैंने भी शेयर कर दिया है। हाँ जी, एनीथिंग थैंक एल्स? यू। नो मैम। माय प्लेजर। दूसरा हिमांशु प्लीज डोंट वरी, आपकी बुक में फॉर्मेट दीजिए। अगर आपने 11th 12th में करा होगा, आपने नोट मेकिंग नहीं करी थी, याद है नहीं उसका मैम, जैसे दिल्ली में भूकंप आया, सो दैट इज ऑल एक्सपोजिटरी राइटिंग बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट डिटेल्स एंड नंबर। Okay, ma'am. Thank you. My And pleasure. I just shared the link. It's me by the name Zoom user. Yes, I just saw it. Please Himanshu, can you see this by this Zoom user? This is I the forgot link. Yes while ma'am, joining. yes Okay, ma'am. ma'am. Please join this group. This is the right group. The group which I sent you was basically for Shamlal College, not for this group, this SPD group.